Hello everyone, my name is Trupti and today we are going to see Class 5th Environmental Studies Part 1 and the name of the lesson is Motions of the Earth. In this lesson, we are going to see what is rotation and what is revolution, the sunset and sunrise, a year and leap year, phases of the moon, the full moon and the new moon, and the lunar months and days, Tithi. So this chapter is very important. Let's start. Rotation. Here we will take an example of a top and will observe its movement. The top turns around itself. Any object that turns around itself actually turns around a certain imaginary line. The turning of an object around itself is called rotation, and the imaginary line around which it rotates is called the axis of its rotation. टॉप यानी लट्टू स्वयं के चारों ओर घूमता है. कोई भी ऑब्जेक्ट वस्तु जब स्वयं के खुद के चारों ओर घूमती है तो उस घूमने के क्रिया को रोटेशन यानी परिभ्रमण कहते हैं. और जिस इमेजिनरी लाइन यानी अदृश्य रेखा के चारों ओर वो ऑब्जेक्ट या वस्तु घूमती है उस लाइन को एक्सिस ऑफ इट्स रोटेशन कहते हैं. नाउ लेट्स सी द अर्थ रोटेशन. हियर विल टेक अ ग्लोब. So it will help us to understand the concept. Take a globe like this and spin it. Note the line around which it rotates. Now take a plumb line and hold it close to the globe as shown in the picture. अभी हम ग्लोब का निरीक्षण करेंगे. ग्लोब कौन से लाइन से परिभ्रमण करता है, रोटेट होता है, ये हम देखेंगे. Let's see. You will see that the plumb line and the Earth's axis NS are at an angle to each other. It means the plumb line और पृथ्वी के एक्सिस ये दोनों लाइंस समांतर नहीं हैं. वे एक दूसरे के साथ कोण बनाती हैं. इसका अर्थ है पृथ्वी का एक्सिस झुका हुआ है. That is, the earth axis is inclined. It is tilted. The earth rotates with its axis inclined like this. और इसी झुकी हुई स्थिति में हमारी पृथ्वी रोटेट होती है, परिभ्रमण करती है. The line NS in the picture shows the Earth's axis. It passes through the center of the Earth. The point N and S are called the poles of the Earth. N is the north pole of the Earth and S is the south pole. If a circle were drawn around the surface of the Earth exactly in between the north and south pole, it would divide the earth into two equal parts. अगर हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बिल्कुल बीच में एक लाइन खींची या एक सर्कल बनाया तो हमारी पृथ्वी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी. दिस इमेजिनरी सर्कल इज कॉल्ड द इक्वेटर. पृथ्वी के इस इमेजिनरी लाइन को इक्वेटर कहते हैं. The two equal parts it makes of the earth are called the northern hemisphere and the southern hemisphere. ये इक्वेटर लाइन अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है. नॉर्थ साइड के पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और साउथ साइड के पार्ट को साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं. नाउ लेट्स सी द सनसेट एंड सनराइज. नाउ लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट. स्टैंड अ कैंडल in the middle of large table. Draw a big circle around the candle. Place the globe at any point on the circle. Light the candle. See that it is dark in the room. Suppose that the candle is the sun. Now observe which part of the globe gets the sunlight and which one does not. The half of the part of the globe gets the sunlight. So this brightened part of the globe, on this surface, it has the day. And the other part, the darkened part, which does not get the sunlight, has the night. When the earth rotates from the west to east, only half of the part faces the sun. This part has day. And the other part that does not get sunlight has night. So, do you understand
how the day and night occurs? Let's see further. The earth rotates anti-clockwise. It means it rotates from west to east. The period of time that the earth takes to complete one rotation is called a day. पृथ्वी को एक रोटेशन, एक फेरा पूरा करने के लिए कंप्लीट वन डे लगता है, एक दिन लगता है। इसका मतलब पूरे 24 आवर्स। लेट्स सी अ ईयर। द अर्थ revolves around the sun, even as it rotates around itself. This is called revolution of the earth. The moon, the satellite of the earth, also revolves around the earth. पृथ्वी अपने चारों ओर घूमते घूमते सूर्य के भी चारों ओर परिक्रमण करती है, यानी घूमती है। The period of time the earth takes to complete one revolution around the sun is called 1 year. There are about 365 days and 6 hours in a year. पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने के लिए एक साल लगता है। एक वर्ष में लगभग 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। It means 365 days and 6 hours. Now let's see further. A leap year. Do you know what is a leap year? Let's see. In Gregorian calendar, the year is taken to have 365 days. It means that it counts 6 hours less every year. That makes 24 hours or 1 day in every 4 years. To make up for this lost 1 day, the month of February in the Gregorian calendar has an extra day every 4th year. This is called a leap year. And it has 366 days instead of 365 days. And the February has 29 days instead of 28 days. ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार एक साल में सामान्यतः 365 डेज होते हैं, पर पृथ्वी को एक रेवोल्यूशन, एक परिभ्रमण कंप्लीट करने के लिए 365 डेज और 6 आवर्स लगते हैं। तो इसका मतलब है हर साल वो 6 घंटों को नहीं गिना जाता। इसका अर्थ ये हुआ कि 4 सालों में 24 आवर्स यानी एक दिन कम गिना जाता है। तो इस एक दिन की पूर्ति करने के लिए हर 4 साल बाद फरवरी महीने में एक एक्स्ट्रा दिन मिलाया जाता है, यानी उस वर्ष फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं और उस साल में 366 डेज। जिस ईयर में फरवरी मंथ में 29 डेज होते हैं उस साल को लीप ईयर कहते हैं। नाउ लेट्स सी द फेजेस ऑफ द मून, द फुल मून एंड द न्यू मून। फुल मून यानी पूर्णिमा एंड द न्यू मून यानी अमावस्या। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। However, these two orbits are intersect. Hence, the sun, the moon and the earth are not always along a straight line. We see half of the moon's surface which faces the earth. That is, from the earth we see only one side of the moon. The moon has no light of its own. We can see the moon because of the sun's light that falls on it. On the full moon night, we see the entire side of moon that faces the earth. पूर्णिमा यानी फुल मून वाली रात में हमें चंद्रमा यानी मून का पूरा भाग दिखाई देता है। And on the new moon night, we cannot see any of it. और अमावस्या की रात को यानी न्यू मून में चंद्रमा का कोई भी भाग हमें नहीं दिखाई देता। From the full moon to the new moon, the illuminated part of the moon seen from the earth becomes smaller and smaller. Illuminated part means the shining part of the moon. यानी पूर्णिमा होने के बाद अमावस तक चंद्रमा घटता जाता है, यानी छोटा होता जाता है। From new moon to full moon, it again grows bigger and bigger. और अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता जाता है, यानी
बड़ा होता जाता है। These different shapes of the moon that we see are called the phases of the moon. I hope you understand the full moon, new moon, and the phases of the moon. Now let's see the last topic, the lunar months and the days, Tithi. You know that it takes 14 or 15 days from new moon to full moon. This is the fourth night of the waxing moon. अमावस से पूर्णिमा तक 15 दिन के अवधि को वैक्सिंग मून कहते हैं, यानी शुक्ल पक्ष कहते हैं. After the full moon, new moon appears smaller and smaller. And after 14-15 days, it is new moon again. This period is the fourth night of the waning moon. इसका मतलब पूर्णिमा के बाद अमावस तक चंद्रमा छोटा होता जाता है और इसे 14 या 15 दिन लगते हैं. इस समय को वैनिंग मून यानी कृष्ण पक्ष कहते हैं. Thus, the period from one new moon to the next is of 28 to 30 days. This is called the lunar month. Lunar month means चांद्रमास. अमावस्या से पूर्णिमा तक अथवा पूर्णिमा से अमावस्या तक प्रत्येक दिन को चांद्रमास की तिथि कहते हैं. That is, every day of lunar month is called a tithi. So, this was our lesson, the motions of the earth. In this lesson, we have seen how the earth rotates, the sunset and sunrise, leap year, and the different phases of the moon. I hope you like this video. Please do like and share and subscribe to my channel to get more videos. Thank you.